hope all of you will be fine. So previously we were talking about different aspects of scientific writing and different forms of technical reports. So today we will resume the same thing, means the technical reports. As you know, in the last class we talked about research questions, survey of recent research, list of product innovations. Then we talked about tutorials in which you can write manuals, user manuals, like you write a booklet which tells us the proper usage of anything. That can be a kind of application, mobile application, that can be a kind of mobile journal, how you operate that mobile. Then we talked about research papers, how to write the research papers. For that you need to survey the field. When you are surveying the field, you are getting into the society, or you go to the society and you ask the participants, you distribute research questions or questionnaires that your participants answer. Then we talked about the research findings. There are different or several ways to identify the research findings. So, and then we talked about how to summarize those previous research papers, how to write the research findings, how to summarize the research findings. There were two ways we discussed or we talked about. The first one was to summarize. The second was, the second way was to describe the things historically, means the historical development, which is known as chronological order. Then we had started reviews of books, reviews of papers and reports. So today we will discuss about the same topic, reviews. As I told you in the last class, that journals and conference papers reviews are done in order to summarize or in order to give your point of view regarding the book, regarding the conference paper, regarding the research papers, journals. So when you are reviewing these conference papers, when you are reviewing the journals, when you are reviewing the books, you need to keep some elements or some characteristics in your mind which are important while reviewing these things. The first thing that you need to keep it in mind is the first sentence while writing the review. The first sentence should be attractive, interesting. It should grab the reader's attention. मतलब आप जब रिव्यू लिखे हैं, रिव्यू का मैंने बताया था कि मतलब एक सपोज बुक है या एक आर्टिकल है, रिसर्च आर्टिकल, जब वो आप लिखते हैं, सॉरी वो पढ़ते हैं, तो उसका आपको रिव्यू लिखना पड़ता है. सपोज कोई इदारा आपको कहता है कि उसका रिव्यू लिखें, तो रिव्यू क्या होता है कि मतलब what that paper contains or what that book contains, you summarize the whole book, you point out the strong areas, you point out the weaknesses of that book, you give some kind of suggestions to rectify those if there are any shortcomings. So when you are writing the review, means when you are going to summarize the whole book, the whole article, the whole conference paper, the first thing you need to do is to grab the reader's attention in the first sentence. आप मतलब शुरू में एक ऐसा सेंटेंस लिखें जिससे जो रीडर्स है ना, उनकी अटेंशन आप ग्रैब कर सकें.
So they should like to read the whole article. They should like to read the whole review. So the first thing is to grab the reader's attention. The second thing that you need to do is to set the background or context for the work being reviewed. जैसा कि आप कोई आर्टिकल वगैरह रिव्यू कर रहे हैं तो उसका आपने एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना है. उसमें आपने बताना है कि मतलब व्हाई दिस बुक इज़ इम्पॉर्टेंट. मतलब उन बुक्स के रिव्यूज़ लिखे जाते हैं जो ज़्यादा फेमस हो. सो ऑन व्हाट बेसिस द बुक इज़ पॉपुलर, on what basis the book is important. So you need to tell about the book and its importance, why that book is important and why it is to be reviewed. Then you need to tell in the same way, in the same paragraph, is there anything important about author? Your authors, if there is one author, you need to tell कि उसका background क्या है, उसने कुछ और बुक्स वगैरह जो लिखी हैं, मतलब where does the strength lie, means जो राइटर की strength है वो कहाँ पे है. अगर दो हैं तो उनके बारे में बताना कि मतलब why these authors are important, what are their strong areas. Then the next thing that is important is list the salient findings or results. मैंने बताया ना कि मतलब वो ये मेन एरिया होता है जहाँ पे आपने समराइज करनी होती है, मींस टू समराइज द होल बुक. सो यू विल write this portion in detail. This would be a little lengthier because it will contain the main findings, the salient features, the salient findings of the book. बुक जिस चीज़ को फोकस कर रही है, या जो आर्टिकल है या जो कॉन्फ्रेंस पेपर है वो जिस चीज़ को फोकस कर रही है, ये जो सेंट्रल आइडिया है उस बुक में जो चीज़ें डिस्कस हो रही है, मेन चीज़ें जो मेन चैप्टर्स हैं उनको समराइज करता है ये पॉइंट, ये पार्ट. सो आपने बताना है कि मतलब सैलिएंट फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स क्या है. So every book, every research paper comes to a conclusion, means at the end वो एक conclusion तक पहुंच जाती है वो book. So you need to tell the things, means book के pages या जो research article के जो pages हैं, suppose if you are reviewing the research article, so it might contain some 16, 17 pages, but when you are writing the review, it doesn't contain 17 or 18 pages. Just the review can be consisting of 1, 2 or 3 pages. मतलब it should not exceed more than 2 or 3 pages. So जब आप इसको कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो findings हैं मेन उनको आप summarize करके कम करके लिख देते हैं. So wait for a while please. So this is important to give a detailed summary of the salient findings, salient features or results of the article being reviewed, of the conference paper being reviewed, of the book being reviewed. So the fourth step means ये जो मैंने जितनी भी बातें की है ये उसी ऑर्डर में ही आपने उसमें मेंशन करनी है. सबसे पहले you need to write a sentence that grabs the attention of the students or readers. Then you need to give a context in which you will write about the importance of the book being reviewed or the article being reviewed. Then in the same way you will tell about the writers, authors. Okay, I was telling you the steps that you need to follow. So we talked about the we talked about the third stage in which you need to summarize the things. The fourth thing that we need to
include in this review is to point out any kind of shortcomings. Means all the authors are not perfect. Means every book, every writer has some kind of shortcomings, and after reading the book or the article, uh, you need to point out those shortcomings, those weaknesses, and you need to suggest possible solutions. So if there are any shortcomings means weaknesses, if there are any kind of problems that the book doesn't cover, that the article doesn't cover, what does it mean? That there can be solutions for that. If you are pointing out the shortcomings, you must point out the suggestions. You must give some kind of suggestions in order to solve those problems. Uh, so this is the fourth step that you need to follow. Then there comes the fifth step or stage, that is, after pointing out shortcomings and suggesting possible solutions, you need to recommend areas for future research. Now, an article or a research paper or conference paper or a book that deals only with one area, that that is dealing with one perspective of vast area. So it doesn't mean that the article is covering all the aspects. So within one discipline, there are multiple, you may say umpteen kind of areas or perspectives which need to be researched. So you need to point out those areas where you feel some kind of gap, where you feel some kind of more input. So you can point out those you can point out those areas which need further investigation, which need further research. So you will have to recommend for the future researchers that what kind of research can be carried out further in the same field. So again, for this you need to have knowledge regarding दैट डिसिप्लिन. मतलब आप एक अच्छे रिव्यूअर उस वक्त तक नहीं बन सकते हैं जब आपके पास जब तक आपके पास नॉलेज ना हो, मींस उसी डिसिप्लिन के हवाले से. अब जो राइटर होता है, मतलब उसका एक in depth analysis होता है, means he does a kind of in depth analysis. After reading many articles, many books, he reaches the conclusion or he comes with that research paper. So आपकी जो रीडिंग है उस राइटर से ज़्यादा होनी चाहिए in order to review that. मतलब सही अंदाज में उसको रिव्यू करने के लिए you need to have greater knowledge than the knowledge he has. So again, if you are going to suggest some future research areas in the same discipline, मतलब उसके रिसर्च से भी रिलेटेड आपको पता होना चाहिए जो उसने न्यू रिसर्च किया है, और उसके साथ साथ डिसिप्लिन में मज़ीद क्या गैप्स हो सकते हैं, मज़ीद कौन से एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ पे फर्दर रिसर्च किया जा सकता है. सो आफ्टर नोइंग those areas, you will be able to suggest the areas, future areas where one can go further. Then the sixth step that you need to do is to recommend the type of reader who would most benefit from the work. So मतलब जो बुक होती है, जो रिसर्च आर्टिकल होता है, as I told you कि मतलब that is dealing with a limited kind of area. मतलब उसका एक खास और लिमिटेड एरिया होता है जिसको वो रिसर्च आर्टिकल डील कर रहा होता है. सो अब वो रिसर्च जो आर्टिकल है वो सबके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता है. दैट कांट बेनिफिट ऑल ऑफ द पीपल. सपोज you are students of political science. A political science may be within political science there are multiple areas. Suppose political science, the area which deals with foreign
policy which deals with the international relationship that can be dealing with the law, international law. So अब इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड किसी ने कोई आर्टिकल लिखा है और उस पर कोई आप रिव्यू लिख रहे हैं, तो द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस वोंट बेनिफिट दैट मच जितना बेनिफिट वो कर सकते हैं, उससे हासिल कर सकते हैं जो इंटरनेशनल लॉ को पढ़ते हैं. So within one discipline, there are multiple perspectives, there are multiple areas where one can benefit if he is related with that area. So आपने क्या करना है कि मतलब उस रीडर को रिकमेंड करना है, मीन्स यू कैन रिकमेंड दैट दीज काइंड ऑफ रीडर्स कैन बेनिफिट the most from this topic or from this article or from this book. So the sixth step, as I told you, you need to identify the reader who is going to benefit from the work. The seventh step that you need to follow is to recommend further readings. मतलब जो further readings के लिए मतलब जो अभी मैंने बताया कि मतलब that is dealing with a particular topic, means that is dealing with one area. So as I told you, the article is dealing with a limited area. So when it is dealing with a limited area, it needs further exploration. In order to get into the depth further, you need to recommend some other books. मतलब उससे रिलेटेड कुछ और बुक्स आप सजेस्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ और आर्टिकल्स आप सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ और जर्नल्स आप सजेस्ट कर सकते हैं कि मतलब इसी से रिलेटेड मीन्स आपको अगर मटेरियल चाहिए तो वो इन बुक्स में आपको मिल सकती है. इस अंदाज में आप ये बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं. Then you need to give your final assessment and salient conclusion. The last stage, that is the eighth step. Eighth step is what? That you need to give your last assessment. वो assessment क्या है कि मतलब आपके लिए ये एक वर्थ रखने वाली बुक है, एक वर्थ रखने वाला आर्टिकल है, और उसमें मतलब आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, मतलब कौन सी चीज़ ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद लग रही है, और उसको एक फाइनल जो है कंक्लूजन देना है कि मतलब this discusses in this way, means within a sentence or two sentences you can conclude the whole book. So these are the steps. But while reviewing the books, while reviewing the articles, while reviewing the conference papers, you need to follow. If you keep the list that I talked right now that I talked about, you need to keep in front of you. Then you can write a standard review of the book or the article. So now I want to share some pages with you. I'm going to share the screen. So I will make you read the first paragraph of the article, the review. Then you will be able to recognize how can we write the first sentence or the first paragraph of the review. So I'm going to share the screen with you people. Wait, please. I think it is visible for all of you. Now look at the book. Look at the paragraph where wait, just read it with me, please. An old saying, from here I'm going to start the paragraph. An old saying goes,
when you don't know where you are going, all roads will take you there. ये एक यू में से सेइंग है, एक दानिशमंदी की बात है, जिसमें कहा जा रहा है कि मतलब वेट an old saying, when you don't know where you are going, all roads will take you there. The authors would have you interpret that saying as follows: if you know where you are going, regardless of much time and money you waste, how many accidents you have, and how much you hate the ride, that matters is sorry all that matters is that you become a better driver. Now ये जो राइटर है उसका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, जैसे मैंने बताया था कि मतलब it is a kind of catchy attractive sentence that it should be. अब उसने जर्नल बात से स्टार्ट नहीं की कि दिस बुक सेज और दिस आर्टिकल इज अबाउट the explanation or the investigation of this and that. Rather उसने एक ईडियम या एक सेइंग से अपनी बात स्टार्ट की. इसी अंदाज में आप अपनी किसी छोटी स्टोरी से आप अपनी बात स्टार्ट कर सकते हैं जब आप कोई आर्टिकल या बुक रिव्यू कर रहे होते हैं. सो ही स्टार्टेड विद अ सेइंग ना. उसके बाद क्या है कि मतलब उसने लास्ट जो सेंटेंस लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ का, इन शॉर्ट दिस पीस seems intended to salvage the reputations of those who led a disastrous software process improvement initiative. अब ये जो बुक है या ये जो आर्टिकल ये रिव्यू कर रहा है, ये एक कंप्यूटर से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई बुक आर्टिकल है, उसको रिव्यू कर रहा है. अब इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आ जाते हैं कि मतलब वो नेक्स्ट पैराग्राफ को कैसे कर रहा है. Although employee surveys were used extensively during the initiative to solicit feedback, we don't know much about the this feedback. We are told there were no major problems with the methodology or with reluctance by the developers in using it. But it is hard to believe that the response was overwhelmingly positive. In any case, it seems that a serious flaw in this approach was that no appropriate buy-in or input was obtained from the developers prior to the mandate. Only after its pursuit was a fait accompli. अब इसने दूसरे पैराग्राफ में इसके अंदर जो थोड़े से शॉर्टकमिंग्स है उसके हवाले से बात की कि मतलब उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, शॉर्टकमिंग्स क्या है. मतलब ही गेव अ काइंड ऑफ जिस्ट रिगार्डिंग द राइटिंग कि उसमें ये किस चीज़ को फोकस कर रहा है. देन उसने उसके बारे में थोड़ी सी शॉर्टकमिंग की बात की. देन अब उसने देखें कि मतलब उस जो जिसको हम सेंट्रल आइडिया कहते हैं उसको कैसे रैप अप किया है इसमें. The conclusion sounds like the CIO's damage control system to the board and shareholders. And although the authors allude to the benefits that were achieved by the attainment of level 2 in the areas of customer satisfaction, number of days of deviation from scheduled delivery date, and the percentage of deviation from the proposed budget, we are given no data. Indeed, from the way the narrative is written, it is unclear that any of these measures improved at all. Again, इस पैराग्राफ में ये किस चीज़ के हवाले से बात कर रहा है, मतलब उसी के हवाले से कि मतलब what kind of shortcomings the article he is reviewing, जो उसके हवाले से रिव्यू कर रहा है. अब हम आते हैं जो एक बुक रिव्यू की मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जिसका मैं बता रहा था कि मतलब उसमें
इश्यूज क्या हो सकते हैं, कि मतलब एक अच्छा रिव्यू और एक बैड रिव्यू में क्या फ़र्क है। अब यहाँ पे जो आपके सामने ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस बुक का नाम है डिज़ाइन ऑफ डिज़ाइन, ऐसे फ्रॉम ए कंप्यूटर साइंटिस्ट, ये बुक का नाम है। और इसको रिव्यू किया है एक बंदे ने, और ये इस लिहाज से एक बैड रिव्यू है कि इसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स है, एंड आई विल पॉइंट आउट दो शॉर्ट कमिंग्स एट द एंड। मतलब रिव्यू खुद ही, मतलब वो जो बुक है या आर्टिकल है उसकी शॉर्ट कमिंग्स के हवाले से बात करता है एक रिव्यू, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक रिव्यू के अंदर क्या शॉर्ट कमिंग्स हो सकते हैं, क्योंकि वी नीड टू know how to write good reviews. Uh, Now look at this paragraph. Brooke's Design of Design. Brooke is the writer of the book Design of Design. Brooke जो है वो writer का नाम है. Is a masterwork from one of the leading computer scientists in history. This 448-page book is an interesting read from cover to cover. The book's 48 chapters are organized into 6 sections. The book starts with section 1, Model of Designing, consisting of 5 chapters. Brooks gives his list of issues and paradigms for design. In section 2, Collaboration and Telecollaboration, Brooks tackles the issue of the modern uh, distributed workplace. Now look at कि मतलब how he started. मतलब he just started with a sentence that is a kind of cliche. क्लीशे का मैंने आपको बताया था ना कि मतलब प्रीवियसली जब हम बात कर रहे थे कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो जिनको हम कहते हैं बाजारी वर्ड्स, वो इतने यूज होते हैं कि मतलब दे आर exhaustedly used and they lose the essence. So ये एक ऐसा master work, great work, a beautiful book, इस किस्म के words these have come as common words. These shouldn't be used. These kind of words shouldn't be used in this way. So पहला मसला क्या है कि मतलब एक मास्टर वर्क, एक जर्नल से हमने स्टेटमेंट दी जो कि मतलब हर राइटर के साथ हर रिव्यू में ये तकरीबन लोग यूज करते हैं. सो इट हैज लॉस्ट इट्स एसेंस एंड इट इज अ काइंड ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ द थिंग्स. द नेक्स्ट प्रॉब्लम इन दिस रिव्यू इज दिस 448 पेज बुक्स. अब ये जो होता है ना कि मतलब पेज नंबर्स या उसके अंदर कितने पेजेस हैं, दिस इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट इशू टू बी डिस्कस्ड इन द रिव्यू, बिकॉज जो रिव्यू है ये जो पेज नंबर्स हैं कि या जितने पेजेस उसके अंदर मौजूद हैं बुक के अंदर, वो तो आपको अमेज़ोन से भी मिल सकता है कि मतलब अमेज़ोन पे क्लिक करें उस बुक का, वो पूरी डिटेल बताता है कि मतलब इसमें पेजेस कितने हैं. सो that is unimportant information which was included by this reviewer. सो आपने इसको इस किस्म की चीज़ें आपने डिस्कस नहीं करनी है. द नेक्स्ट थिंग, मतलब द बुक स्टार्ट्स विद सेक्शन 1. मतलब वो बुक स्टार्ट होती ही सेक्शन 1 से. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि द बुक विल स्टार्ट विद सेक्शन 5. So if there are chapters or if there are sections, those sections and those chapters will be in a chronological order. So to mention that this is the first section or the book starts with first section is a kind of unimportant information that you are giving to your readers. So इस किस्म की बातें आपने नहीं करनी है. एंड देन नेक्स्ट जो आपने बताया कि इन सेक्शन 6 इस तरह बात हो रही है, सेक्शन 4 में ये बात हो रही है, this is not the way to build up a review. So you need to create a kind of continuity, a kind of coherence between the sections without even mentioning the section. Section इस अंदाज में आप नहीं कर सकते. Section 1 comes, then section 2 comes. So this is not the way to describe the things. Then last बात हम करेंगे, इसके बाद we will wind up the lecture.
So the last thing that we are going to discuss is double blind review. या जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड रिव्यूज़। एक ब्लाइंड रिव्यू होता है, दूसरा होता है ब्लाइंड डबल ब्लाइंड रिव्यूज़। इसमें क्या होता है कि जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपका जो आर्टिकल है वो किसी जर्नल को जब आप भेजते हैं तो ऐसे ही नहीं छपता है। रादर योर आर्टिकल इज सेंट टू ए रिव्यूअर, मतलब एक रिव्यूअर को भेजा जाता है एंड ही रिव्यूज योर आर्टिकल एंड यू डोंट नो हु इज योर रिव्यूअर। दिस इज नोन एज ब्लाइंड रिव्यू। ब्लाइंड रिव्यू क्या है कि मतलब आपको पता नहीं चलता कि आपका रिव्यूअर कौन है। इफ यू कम टू नो अबाउट योर रिव्यूअर हु इज योर रिव्यूअर, एजाज का आवाज का हु इज योर रिव्यूअर, तो उसमें होता क्या है कि इफ यू नो अबाउट योर रिव्यूअर you can exploit the situation or you can blackmail him or you can bribe him कि आप उसको कुछ पैसे दे के उससे अच्छी रिपोर्ट बनवा लें ताकि आपका आर्टिकल छप जाए। सो इसलिए जर्नल्स वाले आपको नहीं बताते हैं कि आपका रिव्यूअर कौन है। दे सेंड your article to reviewer and he reviews it and sends back to the journal. In the same way, जो डबल ब्लाइंड रिव्यू होता है उसमें क्या होता है कि बोथ द ऑथर्स एंड रिव्यूअर आर अननोन टू ईच अदर। पहले उसमें ब्लाइंड रिव्यू में क्या होता है कि मतलब ऑथर का आपको पता चल जाता है, जो ऑथर होता है ना उसको उसका पता चल जाता है रिव्यूअर को कि ये ऑथर है, इसने लिखा है, उसका नाम वगैरह डेजिग्नेशन मेंशन होता है। और लेकिन उसमें जो है ऑथर को रिव्यूअर का पता नहीं चलता है। लेकिन डबल ब्लाइंड रिव्यू में क्या होता है कि मतलब दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जब आपका आर्टिकल भेजा जाता है ऑथर को, सॉरी रिव्यूअर को, तो उसमें आपका नाम छुपाया जाता है या उसको ख़त्म डिलीट किया जाता है। देन इट इज सेंट टू द रिव्यूअर, सो ही रिव्यूज इट। सो बोथ रिव्यूअर एंड ऑथर do not know each other, so they could not exploit the situation कि मतलब वो जो रिव्यूअर है वो पैसे ना खा सके और जो ऑथर है वो पैसे ना दे सके या मतलब उसको इन्फ्लुएंस ना कर सके। सो in order to avoid this influence, avoid this kind of blackmailing or exploitation, this system is designed so the standards will be maintained in writing or publishing articles.